A battery of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is being charged with a current of 5 ampere. What is the potential difference between the terminals of the battery? This is a battery of 2 volt and internal resistance that it is having the value 0.1 ohm. Current is flowing 5 ampere in this particular direction, right? 2 volt battery is there, like that. This is a question, and we have to find out what is the potential difference between the terminals of the battery. So what we have to do, the potential drop across internal resistance will be I into R, that is 5, R is 0.1, that is 0.1 into 5, that is 0.5 volt. That is the potential drop across the internal resistance. So therefore the potential drop across the terminals of the battery will be 0.5 volt plus 2 volt, that is your 2.5 volt. That should be your answer. Potential drop across the internal resistance 5 into 0.1, that is 0.5 volt. Potential drop across the terminals of the battery, this plus 2 volt, that is 2.5 volt. That should be your answer. Now another question, very important question. This is a diagram given. See the diagram properly. EMF E1, E2, E3 dot 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 En. Internal resistance R1, R2, R3 dot 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 Rn. Here it is given Ri means ith internal resistance of the battery is equal to K into Ei. You have to find the current through the circuit. Number B, potential difference between the terminals of the ith battery. These two things we have to find out. We can use the Kirchhoff's law here, and we can solve it. For the Kirchhoff's law, better to assume the direction. Say this is the direction of the assumed current. So then how we are going to proceed, just to see on this particular page. Here it is, the total potential drop. We have to start from here. This is the direction anti-clock we have taken. So better is to using KVL, Kirchhoff's voltage law. So I into Rn, potential drop, plus in the same direction I into dot 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 I into R3 plus I into R2 plus I into R1 minus then EMF minus En minus dot 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 E3. पहला टर्मिनल निगेटिव आया, निगेटिव लिखे, माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ E1 इज इक्वल टू 0. एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है. ये पूरा टर्म को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं. तो इस लेफ्ट हैंड टर्म क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट
Rn is equal to E1 plus E2 प्लस E3, सबको राइट हैंड साइड में लेके आए, प्लस डॉट 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 En, इतना आया, और I इज इक्वल टू, ऊपर में क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, इतना हुआ। ये स्टेप आया था, ये पूरा टर्म को इस तरफ इसके नीचे कर दिए, राइट। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया है, एज कंडीशन इज गिवन Ri इज इक्वल टू KEI, ये कंडीशन दिया है, तो हम हर एक जगह इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर I becomes E1 plus E2 plus E3 plus dot 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 En by, in place of R1 I am writing K E1, in place of R2 because it is given Ri is equal to K EI, K E2 and so on, K En. So ultimately what will happen, E1 plus E2 plus dot 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 En by K within bracket E1 plus E2 plus dot 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 En. So this whole term is going to cancel, you will get the I is equal to 1 by K, right. Now the point is potential drop, potential difference is equal to EI minus potential drop, that is I into Ri, is equal to EI minus, in place of I am writing capital I is equal to 1 by K into I is equal to 1 by K, and Ri is equal to, I am writing K EI, already given, so K cancel, so ultimately you will get EI minus EI, that is equal to 0. Right? This is the circuit, and how we have applied. It is given Ri is equal to K EI, so using KVL this, and ultimately I is equal to this much, Ri is equal to K EI, I is equal to this much, and in place of R1 I am writing K E1, in place of R2 K E2, because it is given, this particular part is already given, so ultimately it is going to cancel, and I we got 1 by K, and potential difference is equal to EI minus I Ri, I is 1 by K, Ri is equal to K EI, K cancel, so ultimately potential difference between this terminal battery is 0. Another important question, find the current in the different resistors. This is a circuit given. Just to see the circuit, this 2 volt, this is here negative, here positive, negative, positive, negative, positive. This is a circuit. Here the resistors are attached, 2, 2, 4, 8, 8. So first of all, what we are going to see, these two, ये दोनों जो है सीरीज में है, ये दोनों क्या किस में है, सीरीज में है, और इधर भी ये सीरीज में है, और ये जो है 8 और 8 ये दोनों पैरेलल में है। तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये सर्किट अब चेंज हो गया, यहाँ पर केवल एक रेजिस्टर 4 ओम का, 4 कहाँ से आया, 2 + 2 सीरीज में, और ये सर्किट तो ऐसा था ही, ऐसे दिस, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 8 और ये 8, इसको अगर इधर लेके आ गए, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, तो हम क्या देखेंगे, ये 8 पैरेलल हो जाएगा, ये दिस एंड दिस पैरेलल। तो दो अगर पैरेलल है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 × 8 /
8 प्लस 8, तो 64/16 दैट इज 4। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अटैच कर रहे हैं एक रजिस्टर जो कि इक्विवेलेंट है 8 और 8 का, दैट इज योर था ही ये 8 ओम का और यहाँ पर 4 ओम का था। नाउ द इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग क्यों है, यहाँ देखने वाली बात है। मान लेते हैं ये जो यहाँ जो सर्किट है, यहाँ ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। मान लेते हैं ये सर्किट में ये रजिस्टर को हम अटैच नहीं करते, यहाँ ये एक टर्मिनल बना देते हैं। तो टर्मिनल बनाने का मतलब क्या है, ऐसे करके एक टर्मिनल बना दिया यहाँ पर, ये ऐसे था 4 और यहाँ पर दिस ऐसा था, यहाँ पर ऐसा, ये 8 ये 4। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि ये जो टर्मिनल है, मान लेते हैं इसका नाम ए और इसका बी, तो ए और बी क्या पोटेंशियल डिफरेंस पर है। तो हम देख रहे हैं ए और बी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, बी 2 वोल्ट प्लस और ए जो है वो भी प्लस 2 वोल्ट है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ए और बी का जो टर्मिनल है वो दोनों 2 वोल्ट पर है, तो ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। So no current is going to flow, no current is going to flow in this particular part. कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। क्यों ऐसा हुआ, ये पॉजिटिव 2 और ये यहाँ पर भी जो पॉजिटिव था वो भी यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 वोल्ट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 है। तो 0 होने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो। तो नो करंट इज फ्लो, करंट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच। तो यहाँ पर करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, नो करंट फ्लोज एट एनी ब्रांच। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर भी होगा 0, तो वहाँ करंट फ्लो करेगा नहीं। यहाँ भी फ्लो नहीं कर रहा और इधर भी फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। Right? Interesting question. You have to remember.